आत्मनिर्भर बनने की राह पर है, जहां बहुत सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास अमेजिंग स्टार्टअप आइडियाज हैं। जरूरत है करेक्ट डायरेक्शन की, करेक्ट मोटिवेशन की, मेंटरशिप की एंड ऑफ कोर्स फंडिंग की, जिसको पूरा करने के लिए आ रही है अमेजॉन की रियलिटी टीवी सीरीज मिशन स्टार्ट अप। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे साथ इसके जज, इंडिया टॉप 3 इन्वेस्टर्स मनीष चौधरी, कुणाल बहल एंड अनीशा सिंह है। एंड कुछ ही देर में इसके होस्ट साइरस भी हमारे साथ होंगे। तो ढेर सारी बातें इस अमेजिंग वन ऑफ अ काइंड शो के बारे में इनसे करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू प्रिया दीदी। थैंक यू सो मच जी। सो एज आई सेड, वन ऑफ अ काइंड सीरीज है, तो किस तरह का कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट है? अनीशा, आई स्टार्ट विद यू। निधि, ये थोड़ा डिफरेंट है। इससे पहले जो भी देखा हुआ है, वी सीन सेलिब्रेशन स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप सडनली इंडिया में इज बिकम वेरी पॉपुलर। हम देख रहे हैं इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। बट बिहाइंड दैट जितना हार्डवर्क जाता है और जितना ग्राइंड जाता है, जितना एफर्ट जा रहा है, दिस शो मिशन स्टार्टअप actually gives you an insider look into that. You actually get to see in a small series, 7 episodes में, what must be the hustle and what must be the hard work, the disappointments, the highs, the lows, everything that a founder must go through on a regular basis. So you get to you get an insider's look into that, instead of just seeing the highlights and the funding stories and all that. You actually get to see an insider's look on the behind the scenes look as well, literally. राइट। सो एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं कुणाल, दैट मीन्स हमें जो बैक स्टोरीज हैं, जो इसमें कंटेंडर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी बैक स्टोरीज भी देखने के लिए मिलेंगी। बिल्कुल निधि, मुझे लगता है इस शो की जो ब्यूटी है वो इन फाउंडर्स की जर्नी में, और कहाँ इनकी शुरुआत हुई थी, ये एंटरप्रेन्योर क्यों बने थे, और किन्होंने इन्हें इंस्पायर किया था एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाने के लिए, और रास्ते में इनके इंस्पिरेशन कौन थे, राइट, और क्या बाधाएं आई थी इनको रास्ते में, कैसे उन्होंने इन इश्यूज को ओवरकम भी किया था। तो ये कहानी इन 10 फाउंडर्स की है। ये कहानी इन्वेस्टर्स की नहीं है, ये कहानी फंडिंग की नहीं है, ये कहानी वैल्यूएशन की नहीं है। ये कहानी है कि ये 10 फाउंडिंग टीम्स, ये 10 स्टार्टअप्स कैसे शुरू हुए, कहाँ से शुरू हुए, और आगे जाके कहाँ जाना चाहते हैं। Right. और इस शो में क्योंकि ये अलग अलग सिमुलेशन, अलग अलग चैलेंजेस में एक दूसरे के साथ compete करेंगे, तो उससे इनका भी थोड़ा कैरेक्टर दिखता है और कैरेक्टर डेवलप भी होता है। तो ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और इंस्पायरिंग भी होगा, ना कि सिर्फ करंट फाउंडर्स के लिए जो ऑलरेडी स्टार्टअप चला रहे हैं, Right. बट उनके लिए जिनके कहीं पे एक अंदर दिमाग में, दिल में एक जरा सी एक स्पार्क है कि शायद मैं भी स्टार्टअप कर सकता हूँ या स्टार्टअप कर सकती हूँ। शायद ये उन लोगों को इंस्पायर करेगा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। Right. मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं है। राइट। बट जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अगर मैं फिर से पूछूं मनीष, फ्रॉम ऑल द अदर शोज जो हमने देखे इस तरह से, कि एक फाउंडर्स आते हैं, वो अपना बिजनेस प्लान देते हैं, एंड देन वो इन्वेस्टमेंट मांगते हैं या फंडिंग मांगते हैं। यहाँ पर जैसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ गेम्स हैं या एक्सरसाइजेस हैं और समथिंग दैट एवरीबडी इज गोइंग थ्रू टुगेदर। सो व्हाट इज दैट? नहीं निधि, पहले एक चीज है कि whatever, it's a gamified show as a starting point, और जो भी वो gamification is very realistic to a founder building its company. It is so much relevant, which you आप show में देखोगे कि whatever the tasks or whatever the mission on that episode is, it's very relevant to building a business. And I can tell you एक चीज है कि from the appearance to the way how the format is, ये अलग show है. It's more in depth, living a journey of a founder, the ups, the downs, the comeback will be very interesting to see, right? आप इतना relatable बनोगे with those founders कि आप बोलोगे कि शायद my journey as an entrepreneur, I have gone through this. Right. What could I have done better? These are learnings. It's going to be very inspiring to many.
and that is something what we'll deliver with this show. तो एक चीज promise कर सकता हूँ कि ये एक unique show है. It's not a cut copy paste of another business show, because आज के genre जो है, it's very much business shows are acceptable in the ecosystem. Entrepreneurship is in a rise. It's going to be different, and if Endemol and Amazon didn't make a clutter breaking show, I think there will be no viewership, but this is going to be different. People will enjoy it. It's got everything in it, that I can tell you. और एक और चीज है कि हम all the three investors are Punjabis to start with, so that's even more greater as a starting point. So Kunal is great at Punjabi, Anisha is great at Punjabi. I'm a South Indian Punjabi, so excuse me, but I think we should turn this interview also into Punjabi with both of them. So, अब जैसे शुरू में अनिशा ने कहा था, there's no dearth of people with skill और entrepreneurship की एक जो quality है, और ऐसे में आप तीनों के लिए कितना मुश्किल हुआ उन सब में से 10 को चुनना एक शो के लिए, एक कॉन्सेप्ट के लिए, अनिशा? मुश्किल होता है, right, Nidhi? No matter what you say, it is hard because I think first I have deep respect for anybody who started up and founded, because वो journey in itself requires a lot of himmat and dam. So to do that is a pretty impressive thing. Plus we had some really amazing founders, जिनसे we had to, boil down to 10. So it is definitely not been an easy decision, that you look at and you say, okay, wow. Then you have to weigh out ke kaun sa entrepreneur business idea, you use all those parameters and come to something where you think that, they are building something great and of scale. All I know is we've tried to take the best, not just from the cities. ये जो आप देखेंगे, ये भारत की जर्नी है, ये रियल ट्रू भारत की जर्नी है, ट्रू भारत के फाउंडर्स की जर्नी है. एंड यू विल गेट टू सी दैट, यू विल गेट टू सी फाउंडर स्टोरीज ऑफ founders building from everywhere, which is what I love about this. This is you really get to see the backstories, but you also get to see founders from amazing small towns, the real Bharat building for Bharat and from Bharat for the world. Right. और जिस तरह से आपका एक पुश रहता है बिजनेस फॉर वुमेन बाय वुमेन, उनको और ज्यादा आगे मोटिवेट करने के लिए, तो यहाँ थोड़ा आपका मनीष और कुणाल के साथ ऐसा कुछ टसल था व्हाइल यू वर सिलेक्टिंग 10 में, अरे यार लेडीज को भी लाओ, ऐसा कुछ था? Be honest. Yeah, we were fortunate. The mix was actually of very interesting founders, lot of husband-wife teams, lot of couple teams, lot of phenomenal female founders. And ये हमें वैसे ही दिखने को मिल रहा है in the startup ecosystem, right? The more the startup ecosystem is evolving, you are seeing a lot of diversity. I say India is one of the startup ecosystems जहाँ we will be able to close the gender gap very effectively. And I believe this. You are seeing more and more. So when I started in 2009, there were hardly any female founders. So we're seeing a lot of that. So I think we were fortunate enough. We actually got to see a great quality of founders in general. And I love आपको मजे आएंगे देख के. There are amazing female founders there, and you can see a lot of them evolving. The growth and journey also you see in the series as well. राइट. अच्छा, इसका जो कोलैब है वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हुआ है, तो मनीष, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये शो को आगे या जो मेन ऑब्जेक्टिव आप बता रहे थे कि अल्टीमेटली जो और भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे विल गेट सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, सो हाउ डज दिस कोलैब हेल्प इन दैट? See, I think it's an incredible collaboration with a premier platform like Amazon Prime Video, where the government is also trying to encourage innovation, which is so critical, right? Innovation, entrepreneurship. The moment we heard there's going to be a collaboration in this show, I think there were goosebumps for us. We wanted to be a part of it. कि ये करना ही है, and it's so important. I think this is the right way going forward point of view on how business and entrepreneurship should be encouraged. We are very early days, and I think even the government understands that, and it's very encouraging signs. राइट. अच्छा, आप तीनों सिर्फ जज नहीं हैं शो में, आप मेंटर्स भी बनेंगे. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर द थ्री ऑफ यू, स्टार्टिंग विद यू कुणाल. जब एक इतने बड़े शो में आप मेंटरशिप कर रहे हैं, आई एम श्योर लाइफ में आप ऐसे भी यू बीन मेंटरिंग पीपल, बट व्हाट डज बीइंग अ मेंटर मीन टू यू? See, mentor, I mean, I've been mentoring
hundreds of founders over the last decade and a half. Right. And at different stages, अलग अलग स्टेज पे एक कंपनी के, एक फाउंडर के करियर में उनको एक अलग किस्म की मेंटरशिप चाहिए होती है. कभी जब बिल्कुल शुरुआत करते हैं तो उनको आइडिया क्या सिलेक्ट करना है उसके बारे में मेंटरशिप चाहिए होती है. जब आइडिया सिलेक्ट हो जाता है तब टीम बनाने की मेंटरशिप चाहिए होती है. जब टीम बन जाती है तो फंड रेजिंग की मेंटरशिप चाहिए होती है. जब फंड रेजिंग हो जाती है तो बिजनेस ग्रो करने की मेंटरशिप चाहिए होती है. तो as a mentor, as a friend to hundreds of startup founders in the country, I've seen that a mentor has to adjust themselves, कि आपको एडजस्ट करना चाहिए और समझना चाहिए कि फाउंडर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि वो तो पहली बार ही इस जर्नी के थ्रू जा रहे हैं. आपने एज अ फाउंडर अपनी जर्नी देखी हुई है, और इतने सारे स्टार्टअप के साथ अगर आप इन्वॉल्व एज एन इन्वेस्टर और मेंटर, आपने औरों की भी जर्नी देखी हुई है, तो आप पहचान सकते हैं कि इनको इस समय पे किस तरह की मेंटरशिप चाहिए. वो शायद खुद ना पहचान सके अभी. तो एक अच्छे मेंटोर को एम्पथी पता है कि मैं अपने आप को फाउंडर के अभी इस समय के कॉन्टेक्स्ट में कैसे डाल के उनको वो एडवाइस दूं जो उनको आज हेल्पफुल होगी, ना कि 2 साल बाद, 5 साल बाद बड़ी बड़ी बातें. बट उनको चाहिए कि आज मेरी प्रॉब्लम आप हेल्प करिए, अगले 6 महीने के लिए मेरे लिए आप रोड मैप थोड़ा मेरे को हेल्प करिए. दैट इज वॉट दे वॉन्ट. दैट इज वॉट वो स्टेप दे वॉन्ट, द स्टेपिंग स्टोन्स टू इवेंचुअल सक्सेस फ्रॉम अ मेंटर. राइट. अनीशा, शो के रिगार्ड्स अगर बात करूं, ड्यूरिंग दिस जर्नी जो 7 ही एपिसोड्स हम देखेंगे, तो इसमें फॉर दीज 10 कंटेंडर्स व्हाट वर द थिंग्स दैट यू वर लुकिंग एट कि मैं व्हाइल यू आर मेंटरिंग देम, या फिर प्रोबेबली अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो? Nidhi, one of the most important thing that we look at as investors or as anybody who's evaluating a business is a founder's ability to get up after falling down, right? A founder's ability to tackle, the lows. And I think आप ये शो में आपको देख सकते हैं, right? That is the main thing, right? Founder की जर्नी कभी straight नहीं होती, कभी ऐसी upwards नहीं होती. It's all up and down. And so I think one of the main things is in the show you'll be able to see is the grit, the passion, कितना हार्ड वर्क जाता है, एंड कितने सडनली लाइफ थ्रो सो मेनी चैलेंजेस. हमारे साथ कितनी बार हुआ है एज फाउंडर्स दैट आप सोच रहे थे कुछ एंड सडनली कुछ बदल जाता है, राइट? एंड हाउ यू हैव टू like come out of that, get up to that, and you get to see this. I don't think this is just about entrepreneurship. I think this show is about just grit and resilience, and वो देखने को मिलता है आपको. And I think it's for anybody who's looking for a source of inspiration at that particular point in time. So you get to see that with those founders, and you get to see their journey, which I think is phenomenal. Right. So the three of you have been talking about the show being phenomenal, और एज ऑडियंस हमको बड़ा एंटरटेनिंग लगेगा. तो एंटरटेनिंग फैक्टर में जो एंकर होता है, जो होस्ट होता है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. हाय साइरस. Hi, I'm so sorry, Nidhi. मैं थोड़ा better late than never. Thank you so much. That's the name of my biography. So Cyrus, tell me, we've been hearing from the three of them कि शो बड़ा ही एंटरटेनिंग होगा और एज ऑडियंस हमको मजा आएगा, हम बोर नहीं होंगे कि यार ये तो बिजनेस बेस्ड शो है. एज अ होस्ट ऑफ द सीरीज आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एज अ होस्ट मुझे मतलब बहुत कम है कि मुझे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे मुझे इतनी सीख मिली. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव पीपल जिनके बिजनेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हैं. दे हैव द एंटरप्रेन्योरशिप इन देम. बट हमने ये शो जो है वो एक जिंदगी की सारी चैलेंजेस और मुसीबतें और अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत कंसाइज सिचुएशन में होती हैं. एंड when you are under these pressure situations, how people react, for me is a very, very interesting aspect of seeing these guys operate as entrepreneurs, because also their interpersonal relationships. We have couples on the relationship जो एक business 7 साल से चला रहे हैं. 2 भाई हैं, 2 बचपन के दोस्त हैं जिन्होंने एक छोटा सा सपना किया था और उससे एक बहुत ही बड़ी कंपनी बना दी. So it's a very, very interesting marriage of entertainment but also information, because you're really getting an opportunity to listen to the best of the best about what it's really like, not some small little capsule of आप आए, आप ऐसा करिए और आप स्टार बन जाएंगे या आप entrepreneur बन जाएंगे. So for me it was a big learning. I had a notebook
I used to just take notes of some of the things that were happening, and then hanging and getting to know the wonderful founders and people who were working so hard and really understanding their life. कहाँ से आए हैं, कहाँ से क्या किया है उन लोगों ने to have their businesses do so well. It was beautiful, and these three people here are really the best you can get in the business. So Right. lots of learning. So today when we talk about Manish, Anisha and Kunal, we address them as, the three of India's top investors. लेकिन आप लोगों की भी एक शुरुआत रही होगी, आप लोगों की भी एक beginning रही होगी, where आपका अपना एक struggle period रहा होगा. So going back or looking back, do the three of you feel कि यार हमारे जमाने में भी ऐसा अगर एक platform होता, things have would have been so easy, Manish? No, I wouldn't, I'll tell you one thing, private equity venture capital in this country only started in early 2000s. So I think we are slightly late. We might be the Raj Kapoors of our era of entrepreneurs in that generation, right? The real stars, Ranveer, that era will come. But I think, India is a lot more capitalist today as people also, right? I think we won't say right timing, but I think we are now in a stage, and I've repeatedly told that the genres have now become very common, right? You're looking at 9 years, 10 years old children watching business shows, knowing what is equity and debt. We learned that at the age of 14, 15, right? So, the young TGs are also understanding that I want to create value, I want to become a millionaire, billionaire, I want to list my company. I think those aspirations are coming in so quickly. And I think we are in the right time right now, or really baked for the goodness from where it is. And that's the reason why shows like this will blossom over time, right? And I think it's a great IP what Amazon has created with Mission Startup. For me, आप देखोगे कि I started on Amazon as a seller in 2014. I built Wow on Amazon. 10 years later, I'm on their premier business show. आप सोचो कितने मनीषेस ऐसे मैन्युफैक्चर होंगे taking inspiration from a show like this, right? So times are changing. The speed at which you can build large companies is getting faster, and it's going to be a great knowledge show. It's very important, ज्ञानी वाली shows नहीं चलती इतना. इसमें entertainment, ज्ञान, emotions, very important, right? Right. You'll get a mix of everything to see in this journey. Correct. So, but Anisha, looking back, और आज में अगर आप compare करते हो, so ये जो landscape है इस business का या इस space का, how much do you see has changed or evolved? I mean, it's changed drastically, right, Nidhi? I started in 2004 with my first company. 2009, I joined the startup ecosystem with my Dala. तब तो सिर्फ on a handful you could count even female founders. Now I think they are not the exception, but the norm. Everywhere you see a very diverse ecosystem. And also we've seen the founder ecosystem completely evolve. You see so much camaraderie. You see it in this serial only, Mission Startup, you'll see that's the beauty of it. You actually get to see how this ecosystem, I'm very grateful to the startup ecosystem that we have in this country. Okay. And I think you get to actually see how it's become what it has, right? Every founder is looking to give back. Every founder is cheering on another founder and, bringing each other up. And that is what makes us so unique. That is what makes us one of the largest startup ecosystems right now in the world right now, right? So you get to see all that, and it's really evolved. 2009 में ना का investor होते थे हाथ में, you could count VCs on one hand. Here we have VCs. The government is so helpful. The government is doing so much to grow the startup ecosystem. There is so much at large happening. I'll say now that if you don't start up now, then there is a problem. You should, if you're looking to start, it is now. Now is the time. If not now, then. And hence the title also start up. मतलब Yes, अब तो कर लो, because now so Kunal, ये तो जो contenders हैं या जो 10 entrepreneurs हैं उनकी एक story हो गई और आगे वो कैसे आपके through mentor हो सकते हैं. But जो home watching audience है जिनके अंदर भी एक थोड़ा business का या entrepreneurship का कीड़ा है, will they also gain from it? ये शो देखने के बाद सब लोगों को ये लगने लगेगा कि एक सक्सेसफुल फाउंडर की जर्नी मेरे लाइफ में भी संभव है. एंड उस तरह की इंस्पिरेशन अगर हम कुछ हजारों लोगों में
इंजेक्ट कर दें, तो आई थिंक ये शो काफी सक्सेसफुल रहेगा. So, Cyrus, you've hosted so many other shows across genres और अलग-अलग तरह के थीम हैं. ये शो होस्ट करना आपके लिए कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, एंड व्हाट डू यू से अबाउट दिस शो एंड इट्स प्रोबेबल सक्सेस? It was obviously the most fun show, right? Say that at least. Kunal is there. He's got me. No, it is. It is. I'm saying it's the most fun show on the surface. Obviously, because you have people like these, so it's going to be supremely informative. It's going to be very useful if you're even interested remotely in any idea of setting up something for yourself as a business. But apart from that, what I found amazing and incredible is meeting people, seeing the interpersonal relationships, and during the course of the show, the change in personalities. तो जैसे कि पेंशन बॉक्स नाम का एक बहुत ही कमाल का एक कंपनी है, 2 भाई हैं. बिगिनिंग ऑफ द शो में हम एक भाई की आवाज सुनते थे, एक भाई बात ही नहीं करता था. एंड एज टाइम वेंट बाय, I saw a huge shift and how in confidence in him speaking up till halfway through the show, it's the quiet brother who started expressing himself more, and the beautiful interpersonal relationships, because India is a lot about that, and जैसे कि अनीशा ने भी पहले बोला था कि एक दूसरे की भी हेल्प कर रहे हैं लोग, क्योंकि अभी हम क्या है, नेसेंट स्टेज पे हैं, एज मनीष सेड. ये नहीं कि 100 सालों से एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इंडिया में है. सो एवरीवनस काइंड ऑफ पुशिंग ईच अदर एंड देन सेइंग हाँ ठीक है बाद में देखेंगे क्या होता है, पर अभी के लिए एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं. एंड देयर इज एन एक्साइटमेंट एंड फन, देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग, एंड आई वाज अर्लियर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट it's an amazing opportunity because you have people like these on the show who are talking about, walking you through how to do it. You have to go and get that single time and ask them to give attention to your business. That would be virtually impossible or extremely expensive. So you're getting it for free. So it's a great combo, I think. मुझे बड़ा मजा है. मैं भी अपना शुरू कर रहा हूँ. और आप चार जितने एक्साइटमेंट से इस पूरे शो के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम श्योर हमारी जो भी इंटरव्यू देखने वाली ऑडियंस है वो एक्साइटमेंट पहुंच गई होगी. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग द फोर ऑफ यू. Start a business after this. I'm telling you. मैं वही सोच रही हूँ ना, वो कीड़ा जैसे कुणाल ने कहा होता है और उसके बाद लोगों को लगा अरे मैं भी कर सकती हूँ, तो स्टार्ट अब हम भी अभी भी कर देंगे. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू द फोर ऑफ यू फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू एंड विशिंग यू ऑल द लक फॉर नॉट जस्ट दिस शो, फॉर एवरीथिंग दैट यू डू इन फ्यूचर. Thank you so much.